Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And the purpose to conduct such kind of session is that कि आपको you must be aware about what things is going on and what is important in your newspaper. Majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. So कैसे हैं आप सब and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे and before we start, let me know if my voice is audible. Am I clearly visible and audible to each and everyone? Okay. So as we know that in newspaper analysis, what exactly we discuss about the national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, and also we discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, like recently as we have seen that women reservation bill was in the parliament. What was the outcome and why the government of India demanding and the MPs are demanding 33% of reservation for in women reservation bill. So these are all things that we discuss in the newspaper analysis. And before we start, here is a very good quote. So quote की शुरुआत करेंगे. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. और उसके बाद questions of the day, we'll ask you the 5 questions and sorry, that 5 question would be very important and that gives you an immense idea कि आपको newspaper से what kind of things they can ask in your exam. And quick tips में आज देखेंगे SAR country को learn करने के लिए. And here we have the very first news is India ranks 7th in this year climate change performance index. So यहाँ पे COP जो है आपका conference of parties यहाँ पे हो रही है दुबई में, right? So India ranks 7th in the year's climate change performance index, up 1 spot from the previous one and also remained among the highest performers. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स COP28 जो मैंने आपको बताया अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के बारे में, monitoring climate mitigation effort of 63 countries plus the EU, which is European Union, more than 90% of the global greenhouse gas emission, India has received a high ranking in the greenhouse gas emission. और ग्रीन हाउस गैस इमिशन में आपका मीथेन भी है, उसमें वाटर वेपर भी है, बट अ मीडियम इन क्लाइमेट पॉलिसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द प्रीवियस ईयर. While we should know about India is the world's most populous country, it has relatively low per capita emission, the index said. That means ये इंडेक्स में इंडिया की रैंक को आपको ध्यान रखनी है. और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में यहाँ पे COP28 जो दुबई में हो रही है वहाँ पे डिसाइड हुआ. तो इस अगर चार्ट को आप देखें आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की, यहाँ पे यू विल क्लियरली सी यहाँ पे डेनमार्क 4th पोजीशन, एस्टोनिया, फिलीपींस और 7th पोजीशन पे इंडिया है. एंड यहाँ पे देखोगे 7th पोजीशन मैंने यहाँ मार्क की हुई है आपके सामने. एंड यहाँ पे रोमानिया, थाईलैंड, फिनलैंड ये सब 26 रैंक पे है. वियतनाम और ये जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स 57 पे है, जापान 58 पे है, मलेशिया 59 पे है एंड सऊदी अरेबिया यहाँ पे 67 पे है. सो इसमें आपको एक और चीज़ समझनी होगी कॉप की मीटिंग्स के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे दी. एंड हियर इज़ कॉप. सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग्स हुई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अंडरस्टैंड द टाइम लाइन. 1995 में COP 1 हुई थी बर्लिन जर्मनी में, द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड वी हैड होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP8 in New Delhi, India in year of 2002. एंड 2023 में ये हो रही है अबू धाबी में, दैट इज़ UAE में हो रही है हमारी COP23 COP 28. 27 हुई थी हमारे इजिप्ट में. सो ये जानना इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ अगेन वी कम टू द पॉइंट. ये हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. इंडिया की रैंकिंग हमें पता होनी चाहिए. डेनमार्क की 4th पोजीशन है, एस्टोनिया इज़ 5th पोजीशन, फिलीपींस इज़ 6th वन एंड 7th पे आपका इंडिया एंड 8th वन पे है नीदरलैंड्स. नाउ इस आर्टिकल में अगर आप देखें इसमें आपको है अंबेडकर टच रीथिंकिंग सोशल जस्टिस पॉलिसी. So in short, if you talk about that modern democracy, which is synonymous with both the value of social harmony and
reforms that ensure dignity and self-respect to participants, especially the historically deprived and socially marginalized people. जो बाबा साहब अम्बेडकर का एक ड्रीम था, that emerged a torch bearer of liberal enlightened ideas and expected that जो हमारा post colonial India होगा, that would be distinct from the exploitative Brahminical past and invite Dalits and other marginalized communities to be equal shareholders in the nation's economic and political development. But हम बात करें यहाँ पे बाबा साहेब के principles के बारे में, where the social justice would reprimand the current realm of neoliberal economy for its neglect of the concern of Dalit and Adivasis. So Ambedkar Sahab jo the, that becomes crucial in such a discourse because his approach allows us to diagnose illness in the social and economic order. So it is well documented that neoliberal markets is aligned to such ethical values, and poverty celebrates the exclusive control of few corporate bodies and businessmen over capitalist development. So if we talk about Adivasis' concern to protect their habitats, ecological order, cultural autonomy must be addressed. So जो हमारा new framework है of the social justice must ensure that an impressive class among Dalits and Adivasis within scheduled tribes emerge as leaders, business entrepreneurs and influencers in the economic sphere. Further, it should not be, we can say that Dalits and Adivasis should not be identified only as the poor and migrant working class that is dependent upon the benevolence of corporate social responsibility for their livelihood. So instead, these groups should be advanced as the essential components of urbanization, industrial production and technological innovation. And the state deviates from its responsibility. Ambedkar version of social justice that would help us to redefine capitalism as a pluralist and cooperative mode of economic order, or that guarantees the substantive participation of Dalits and Adivasi in the market economy and in the associated institution of power and privilege. Next we talk about यहाँ पे है भाषिनी ऐप. अब ये भाषिनी, भाषा से भाषिनी ऐप हुआ. तो Russian delegates at the G20 summits was pleasantly surprised when the Bhashini responded to his query in his mother tongue, something unimaginable just a few years ago. But this is just a peep into the future. Some of this possible that technology could bring into our lives were brought to life at Digital India Experience Zone in Hall 4 of the International Media Center. So जो भाषिनी है is got जुगलबंदी were born out in Ministry of Electronics and Information Technology. It means ये जो हमारा Ministry of Electronics and Information Technology initiative to showcase some of the cutting edge technology to the delegates of the G20 during the summit. So यहाँ पे they had an immersive experience of India's prowess in digital infrastructure in accordance with the theme of India G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. तो ये था हमारा One Earth, One Family and One Future. That was the theme of this one, Vasudev Kutumb, and which focuses on inclusivity. और जो भाषिनी है वो promotes this by breaking the language barriers. It brings people together not just in India as envisioned in the mission of एक भारत श्रेष्ठ भारत. जो आपका मिशन है, हमारे देश का मिशन है एक भारत and श्रेष्ठ भारत. But across the globe by linking people across different languages, truly reflecting the age-old Indian ethos of Vasudev Kutumb. So Vasudev Kutumbakam at its core, Bhashini is a digital symphony harmonizing with Indian languages. It provides a welcoming embrace of familiarity, offering voice-based access to the digital universe. So this is very important to know that the better informed citizen and be an
integral contributor to Viksit Bharat in Amrit Kal through Jan Bhagidari. But Bhashini is more than just a gateway, it's a hub of collaboration community that nestled within digital halls and is the Bhasha Dan section where individuals from diverse walk of the converge to contribute a plethora of crowd sourcing initiative, and this spirit of collective effort resonates deeply with the ethos of India, unity in diversity. यहाँ पे आपको इसकी आपकी मेंशन भी की हुई है. ये सोर्स जो अब मैंने आपको बताई ये हमने लिया था PIB से, विच इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये थीम हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका मोया डिजीज़, तो आपका आजकल आपने रील्स देखी होगी मोए, तो आप ये मत सोचें कि वही वाली है, ठीक है. सो इसमें है कि हमारा इफ़ यू टॉक अबाउट मोया डिजीज़, so moya disease that found in 1 out of 1 lakh people in the world, ever rare in India, major blood vessel emerging from carotid arteries that blocked due to the moya disease. और एक बाईपास सर्जरी होती है ब्रेन में जिसके थ्रू ये होता है, जिसके थ्रू इसको हटाते हैं. सो मोया डिजीज़ होती है, मतलब मोस्टली डायग्नोस्ड होती है जो कि 10 साल से 14 साल के बच्चे, मतलब it usually occurs in the 10 to 14 years of old in the adults in their 40s. So in short we can say females and people of Asian ethnicity have a higher risk of moya disease, and research studies show a genetic link. So the term जो है मोया एक जापानीज टर्म है, जो टर्म है ये मोया ये एक जापानीज टर्म है that refers to a hazy puff of smoke or cloud. So इसमें ऐसा क्या होता है कि जो मोया डिजीज़ है, this is how the blood vessels appears in the angiogram, a type of brain scan. तो अभी मोया जो है associated with the certain conditions such as Down syndrome, sickle cell anemia, neurofibromatosis type 1. So the girl in present case was having sickle cell, आप इसमें देख सकते हो इस इमेज में. नाउ गति शक्ति मास्टर प्लान, इसमें क्या है इसमें क्या क्या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है. रोडवे कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड, उसके बाद रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी को इंक्रीज करनी है फॉर द स्मूथनेस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट. रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड ऑफ 225 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, 4G कनेक्टिविटी विलेज बाय फाइनेंशियल 2022. ट्रांसमिशन नेटवर्क को इंक्रीज करना है और एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एयरड्रॉम्स को इन्विजन करना है. अब ये जो न्यूज़ है आपको मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है. यहाँ पे जो महुआ मित्रा हैं, यहाँ पे जो महुआ मोइत्रा जी हैं, उनको यहाँ से लोकसभा से सस्पेंड किया गया. उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं? सो नाउ दैट शी हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा, व्हाट ऑप्शन डज महुआ मोइत्रा हैव? She can go to the Supreme Court. In 2005, the court held that proceeding of parliament that may be tainted by gross illegality or unconstitutionality are not protected from judicial scrutiny. This could be her argument. और जो लीडर हैं ये तृणमूल कांग्रेस की हैं. MP Mahua Moitra was expelled from Lok Sabha on Friday after the House adopted the report of its ethics committee and then found her guilty of indulging is unethical conduct and committing serious misdemeanors and recommended her expulsion. So can Mahua Mitra go to the Supreme Court in appeal? देखो नॉर्मली अगर आप जानने की कोशिश करें यहाँ पे, सो नॉर्मली द स्टोरी इज़ दैट अभी आपने देखा होगा कि जो वायनाड से हमारे MP थे, अभी भी हैं, नॉट सॉरी टू से, वो हमारे राहुल गांधी, एंड उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? सो कैन महुआ मित्रा गो टू द सुप्रीम कोर्ट? नॉर्मली जो हाउस प्रीसीडिंग होती है दैट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी. क्या हमारा कोई आर्टिकल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डिफाइन करता है? हाँ जी बिल्कुल है, आर्टिकल 122. सो आर्टिकल 122 हमें क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स immunity to the a proceeding from a challenge in court, that former of Lok Sabha secretary. और हमारा जो आर्टिकल 122 है ये हमारा क्या कहता है? The validity of any proceeding in the parliament
shall not be called the questions on the ground of any alleged irregularity of procedure, which means in short we can say that कि ये स्पेसिफाई करता है कि नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन हुम पावर्स आर वेस्टेड फॉर इरेगुलरिटी प्रोसीजर और कोड ऑफ बिजनेस. सो यहाँ पे जो महुआ मित्रा है दैट डज नॉट हैव ऑप्शन टू चैलेंजिंग हर एक्सक्लूजन इन हर अपेक्स कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन 2007 में उन्होंने साफ साफ क्लियर की थी ये चीज़. वो एक केस था लाइक राजा रामपाल केस में. सो राजा रामपाल केस में उन्होंने डिफाइन किया था इन द ईयर ऑफ 2007 में राजा रामपाल केस, और वहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर हुई थी कि दोज रिस्ट्रिक्शंस आर ओनली फ्रॉम प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज. देयर मे बी अदर केस वेयर जुडिशियल रिव्यू मे बी नेसेसरी. सो व्हाट वाज द राजा रामपाल केस? सो यहाँ पे राजा रामपाल केस बीएसपी के लीडर थे. ये राजा रामपाल साहब जो थे बहुजन समाज पार्टी के लीडर थे एट that time, was among to 12 MPs and 11 from the लोक सभा. इनको एक्सपेल किया गया था. तो जनवरी 2007 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे इंडिया के वीके सब्बरवाल जी. जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम है वीके सब्बरवाल. सो उन्होंने डिसमिस किया था पिटीशन को दैट एक्सपेल्ड MPs and upheld their exclusion in a 4-in-1 majority judgment. So what this provision of the constitution? आर्टिकल जो हमारा 105 है दैट डील्स विद द पावर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल 105 दैट क्लियरली सेज दैट पार्लियामेंट हैव सोवरेन पावर टू डिसमिस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो आर्टिकल 105 डील्स विद द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर एंड द कमिटीज. और आर्टिकल हमारा 105 क्लॉज 3 हमारा ये कहता है कि द पावर्स privilege and immunity of each house of the parliament and the members of the committee of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall by those that house of its members and committee immediately before the coming into force of section 15th of the constitution, जिसमें कि 44th Amendment Act 1978 में ये चीज़ डिक्लेयर हुई थी. तो माय फ्रेंड आपको कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि राहुल गांधी के केस में ऐसा क्या हुआ था, वो फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपेल होने के बाद भी वो फिर से आए थे. यहाँ पे एक प्रिविलेज कमेटी होती है जिसके बारे में हमने प्रीवियस न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस की थी आपसे. द प्रिविलेज कमेटी एंड एथिक्स कमेटी इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू द misconduct of a member and whether the person has brought down the dignity of the house or behaved in a manner which is unbecoming of a member. Therefore a proper procedure has to be laid down, and you cannot follow the same procedure and method followed by the other committee which study subject and bills. Now the next one, inflation remains a bugbear. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. इसमें आपको जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई है. नॉट मच डिटेल इसमें मेंशन नहीं की हुई है क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए हमारे पास 2 टूल्स होती हैं मेजर करने के लिए. मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वन होती है आपकी CPI विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका होता है WPI विच इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स. सो RBI टेकिंग एज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू मेजर द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री. एंड ये इन्फ्लेशन जो है उर्जित पटेल कमेटी ने 2015 में दी थी कि इंस्टेड ऑफ WPI ट्राई टू मेजर द विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वही इस आर्टिकल में मेंशन की हुई है. नौ बात हम आज की क्विक टिप्स में MBBS पेन 7 कंट्रीज, और ये आपका इस साल के AILET के एग्जाम में भी आया. मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल. तो ये MBBS पेन एक काइंड ऑफ नेमोनिक्स है. द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स वी कैन लर्न दिस ऑल कंट्रीज नेम, द 7 कंट्री के बारे में. उसके बाद साब को लर्न करो. स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विथ भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल. उसके बाद आज के क्वेश्चन ऑफ द डे. अब यहाँ पे रिसेंटली जो गरबा है हमारा, गरबा को यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में मेंशन की हुई है. सो रिगार्डिंग द यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट व्हिच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? द ऑप्शन ए, the list includes only intangible cultural artifacts. Option B, intangible cultural heritage refers to physical monuments and structures.
element of the intangible cultural heritage list are identified based on their universal significance, and inclusion of on the list guarantees funding and protection for the cultural element. ये आपको क्यों पूछ रहा हूँ कि गरबा को अभी रिसेंटली यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में मेंशन की हुई है. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो माय फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी. So UNESCO Intangible Cultural Heritage List is a compilation maintained by the UNESCO, which is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that recognize and safeguard cultural practices, tradition, knowledge and skills that are considered intangible cultural heritage. Annapurna Certificate Program is an initiative of the Niti Aayog, Food Safety and Standards Authority of India, Food Corporation of India and Indian Council for Cultural Relation. तो अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, डी इज द राइट आंसर. विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज गैस जाइंट इन आवर सोलर सिस्टम? और गैस जाइंट्स जो हैं दैट आर लार्ज प्लैनेट्स composed mostly of gases such as hydrogen and helium with a relatively small rocky core, and the gas giants of our solar system like Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune together make up a group known as the Jovian planets. Which substance is commonly used in cloud seeding? ये जो cloud seeding है my friend, which means that artificial rain की बात हो रही है, to promote the formation of ice crystals in clouds, and the right answer is silver iodide. The last question, production gap report is published by, और ये D is the right answer, none of the above, क्योंकि ये report authorize करती है SEI Stockholm Environment Institute. This is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this session, please let me know in the comment section. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so we'll get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you tomorrow for the same time. Until then, bye-bye and take care. Thank you so much for joining with us.